Hello, young friends. Greetings and welcome to my YouTube channel. Young friends, the topic of my last video was who is preferable? That means a person who is creative or a person who is hardworking. Or there could be yet another combination, a more creative person yet less hardworking. And there could be a person who is hardworking but less creative. Young friends, if you remember that I have given my views, that I would, as a selector, always prefer a person who may be a little less hardworking, but has to be creative. Creativity in the armed forces, young friends, is something which is non-negotiable. And one of the viewers of the channel has asked me a question. Perhaps he was convinced and he sincerely wants to raise or enhance his creativity. And he has asked me a question, sir, how to improve creativity? Young friends, आज का ये वीडियो उसी व्यूअर के सवाल के परिप्रेक्ष्य में है. आई एम ट्राइंग टू गिव आंसर्स आई एम सेइंग deliberately because such a question cannot be answered in a short way, right? Let's, young friends, here is the question. I'm sharing the screenshot and the viewer asks, sir, how to improve or develop creativity? Before I answer, young friends, I'm requesting it will be much better in case you could introduce yourself. Here I'm seeing the handle is there with the Air Force logo and at the rate of UPSC_CDS_AFA. Well, it does not give me any certain identity of the viewer. Okay, in the handle you may write this way, but at least it will be better in case while asking the questions you could reveal yourself who you are. Anyway, as I've told you that the answer to this question, that means how to improve or develop creativity, would be a very, very long answer. Frankly speaking, there have been certain occasions on which I have taken long hours of workshop on this very same topic. Young friends, before I come here to answer the query of this person, I'm giving you my stand that creativity is always preferred. Rowing harder, as per a proverb, and the proverb goes like this: rowing harder does not help if the boat is heading in the wrong direction. Not very difficult to understand the essence of it. मामला बहुत ही स्पष्ट है. आप कितनी भी मेहनत कर लें अपनी नाव को खेना, एक जिसको कहते हैं ना रोइंग, अपनी नाव खेने में कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन अगर नाव गलत दिशा में जा रही है तो फिर इससे नाव कभी भी किनारे नहीं पहुंच पाएगी एंड ऑल योर हार्ड वर्क विल गो इन वेन. यंग फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि the realization, the wisdom and the creativity, all these, they should be given their due priority. They always take in your personality the front seat. Now, I'll try to give my views here, but as I've told you earlier also, it's a very long topic. So इस टॉपिक को हम 4 हिस्सों में कवर करेंगे. First will be, what are the features of a creative personality?
Guys, understand? There are some people who always give priority to the hard work. There are some people who depend on their creativity, imagination, and the mental faculties. So let's understand the features of creative personality. The second video will be creativity and the armed forces. Guys, you must understand, if the selection boards and I as a psychologist, as a mentor, if I am giving emphasis or stress in creativity, then there's a reason for that. And you must understand what is the reason of harping so much on creativity. क्रिएटिविटी के ऊपर हम इतना जोर क्यों देते हैं, और क्रिएटिविटी अगर ना रहे किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। अगली बात, I for one very strongly believe, my young friends, please remember, ये मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास है, बहुत ही मैं इस बात को बहुत ही जोर देकर के कहना चाहता हूं कि we are all born with certain level of certain amount of creativity in our personality, and let me tell you, our creativity is at best when we are children. धीरे धीरे as we socialize, as we learn many new things, हमारी क्रिएटिविटी दब जाती है। What are the reasons for this suppression of creativity, ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि what are a few means, methods, ways, exercises through which we can enhance our creativity। हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम बिना बहुत ज्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग लिए और क्या कर सकते हैं। सो यंग फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि ये आपको फेयर लगेगा, अच्छा लगेगा कि इस तरीके से एक काफी बड़ा सा टॉपिक है, उसको हम लोग किस तरीके से छोटे छोटे हिस्से में समझ सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे द फीचर्स ऑफ द क्रिएटिव पर्सनालिटी। क्रिएटिविटी के साथ जो लोग रहते हैं, जिनकी पर्सनालिटी में क्रिएटिविटी एक प्राइमरी चीज है, फ्रंट सीट है, उस पर्सनालिटी के क्या फीचर्स हैं। यंग फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की तरफ, घटना नहीं कह सकते हैं, आप अपने स्कूल के समय पर पीटीए होती रही होगी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग, और जब आपका कोई टर्म एग्जाम खत्म होता होगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए आपके पेरेंट्स टीचर्स के साथ, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स के साथ गए होंगे, और उसमें चाहे आपके लिए चाहे आपके फ्रेंड्स के लिए टीचर्स एक रिमार्क्स, ऑलमोस्ट हर पीटीए में, तो मैंने तो खुद तो देखा ही है, बीइंग द एजुकेशन ऑफिसर एंड अ पेरेंट माई सेल्फ, टीचर्स कहते हैं कि ये लड़का इंटेलिजेंट है लेकिन मेहनत नहीं करता। ही इज इंटेलिजेंट ऑल राइट बट ही डजंट वर्क हार्ड, और his marks are not a reflection of his intelligence। और फिर टीचर्स उस बच्चे के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि जिसको सुन करके पेरेंट्स को लगता है कि ओ माय गॉड, मैं तो अपने बच्चे को, या हम तो अपने बच्चे को इतना इंटेलिजेंट, इतना योग्य समझते हैं, बट लगता है ये बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। एक्चुअली ठीक है, कुछ बच्चे जरूर ऐसे होते होंगे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन I for one very strongly believe that those people whose intelligence is not converted into academic performance in terms of marks, इसमें से मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं। अब आप कहेंगे कि क्या क्रिएटिव बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स में अच्छा नहीं करते हैं? Yes, the answer is a lot of creative children, they are having certain features in their personality। उनकी कुछ आदतें, उनका कुछ स्वभाव ऐसा होता है जिसकी वजह से मार्क्स उनके थोड़े से, शायद, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, but definitely in most of the cases their
poor performance in terms of marks is largely attributed to their creative nature and their creativity has not been managed well. अब हम देखेंगे कि वो फीचर्स क्या होते हैं क्रिएटिव पर्सनैलिटी के। क्रिएटिव बच्चों के बारे में आमतौर पर पेरेंट्स या एल्डर्स वो कहते हैं कि ये दूसरे बच्चों की तरह से नहीं है। दे आर अ लिटिल फ्रीक, दे आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। क्यों? सबसे पहली बात कि ये जो बच्चे होते हैं ये they are not very comfortable in accepting everything as it is told to them। जो उनको बोला जाता है वो वो उसको आंख मूंद करके फॉलो नहीं करते हैं। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन देयर ओन टर्म्स with their own convincing logic। They are not the people who are, some people they say that they are non-conformist। I won't say non-conformist, ये थोड़ा सा judgmental हो जाएगा, but certainly they are the people who don't take the things on the face value। They apply their own reason and logic to understand। क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जो थोड़े से आजाद ख्याल के होते हैं, स्वतंत्र उनका लॉजिक होता है। दे हैव गॉट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लॉजिक। yes, I'm not saying that every time their being independence is productive for them, but their independence is alive, active। हर चीज में वो अपना रूट ऑफ लॉजिक उसके साथ वो जाना चाहते हैं। they are curious and they have got their very active exploratory instinct and they would like to learn every time something or the other that is new। Friends, yahan pe let's understand that there are people who are accepting the facts। टीचर ने या पेरेंट्स ने या किसी और एल्डर ने जो चीज बता दी तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चीज को उसी तरीके से विदाउट क्वेश्चनिंग रिसीव कर लेते हैं। वेल, इन अ वे दिस ब्रिंग्स द इमेज ऑफ अ गुड बॉय अटैच टू देम। ये अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कि अगर आप विदाउट questioning, if you keep on accepting the facts, in that case, you will not be in a position to contribute anything on your own। Remember, जितने भी inventions हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसा आविष्कार हो जो उन बच्चों ने किया हो जो पेरेंट्स की निगाह में हर चीज या टीचर्स की निगाह में हर चीज एक्सेप्ट करते चले आते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी अपनी तरफ से, वैसे क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि टू क्रिएट समथिंग विच इज न्यू, विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर दैट। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी इस तरीके से वो एग्जिबिट करते हैं। दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, दे कीप ऑन लर्निंग, दे शो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि दे माइट री इन्वेंट द व्हील, but they get lot of satisfaction in even reinventing the wheel, okay, using their own independent logic। और एक ये भी बात है कि when people say that this child is different, I'm talking about the children with creativity who often listen or hear the remarks that ये तो दूसरों की तरह से नहीं, दूसरों से different है। क्रिएटिव बच्चे they enjoy such a status। दूसरे बच्चे अगर आप बोल दें कि ये तो दूसरों बच्चों की तरह से, दूसरे बच्चों की तरह से नहीं है, तो समटाइम्स सच चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट। उनको लगता है अरे माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद मी। बट क्रिएटिव चिल्ड्रन दे एंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्रिएटिव बच्चे
ये थोड़े से इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दे डोंट स्टे ऑन एनी पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग, बिकॉज उनको नई नई चीजें चाहिए। They want to satisfy their, their curiosity, or for that matter, creative instinct, by looking for something new always. इसीलिए उनके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, और अ पर्सन हु डज नॉट stay on any point, any thought for a long time. Creative children, they feel happiness only for a short time because of certain fact, because of certain things which they have found, and they always keep on looking for something better, something new, something different. एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में। दे आर द पीपल हु लव टू टेक रिस्क्स। They are the people who are more confident even in the unknown situations. और मैं आपको बता दूं, हम साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी जब किसी की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं या प्रोफाइल करते हैं, तो हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी। यानी जब चीजों के बारे में कुछ ना पता हो, हेजी हो, तो सम पीपल दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, easy. Some people feel just the opposite of it. They feel uneasy. Now, risk-taking behavior, confidence and tolerance to ambiguity, ये तीनों जो व्यक्ति के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज हैं रादर, ये क्रिएटिव लोगों में ज्यादा होते हैं, और एट द सेम टाइम दे आर मोर इन अलाइनमेंट विद द personality of a prospective military officer. Another thing is, you will find creative people always love the things which are original. They are not happy with the, things which are copied, and that you can find it from their, comments, from their views. Let's say if some children, they have been given to watch any particular movie या जो भी चीज है, and you ask how did you like this movie, आप देखेंगे जो बच्चा क्रिएटिव होगा, he might not like, वो कहेगा अरे ऐसी चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं, we have seen such a thing even the past, even in the past such things have appeared, they don't enjoy. Whereas the people who are less creative, उनका ओरिजिनलिटी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। If they are not in a position to really appreciate what is original and what is a copy, frankly speaking, इसके साथ साथ एक अनप्लेजेंट फैक्ट ये है कि creative people, they are not very successful. I'm not saying that they in all cases, but many creative people, they are not successful in material terms. Like I have told you that the creative children, they might not do well in academics, because academics में क्या होता है, the facts are given to you, you are supposed to be accepting these facts without any question. और आजकल because of the knowledge boom, academic system की भी अपनी compulsions हैं. Your creative instincts wants freedom to explore, but by the time you are exploring anything independently, too much of time will be wasted. So that's why you are advised that, okay, please accept these facts. You are given your textbooks, they supply you the facts, your teachers explain you and expect you that you are going to accept all these things in your own interest. अब एक creative बच्चा, okay, who is not happy with unquestioned or unquestionable acceptance of the facts, he will feel uncomfortable. And since he is not convinced and comfortable
his performance is likely to be affected in the examinations. Another thing is that the creative people, they feel a little, you know, a sense of conflict even in the social situations. Not because they are antisocial or asocial. It is because other people are not comfortable with them. They want the persons to be like many others who keep on accepting without questioning anything, who don't have an urge to see, to create something new, something offbeat. यानी क्रिएटिव बच्चों के साथ उनको समाज में प्रॉब्लम नहीं होती, समाज को उनसे प्रॉब्लम होती है. तो समटाइम्स यू फाइंड दैट द पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी, समटाइम्स द टीचर्स आर नॉट वेरी हैप्पी, और समटाइम्स ऑफ कोर्स मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग about the creative people. When they become adult, they occupy a position, in office, they settle down in some profession, they are married. और ऐसे लोगों के बारे में फिर एक ये भी अनप्लेजेंट फैक्ट है, दो आई विल नॉट एडवोकेट बीइंग नॉन क्रिएटिव, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, ये फैक्ट है कि क्रिएटिव बच्चों के साथ या क्रिएटिव लोगों के साथ दूसरे लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है. लेकिन क्रिएटिव लोगों के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड and they are highly satisfied within themselves, though their success either in the field of academics or in the fields of their profession, that might not be that very resounding, frankly speaking. लेकिन फिर भी the amount of satisfaction which creative people have got with themselves, they don't have much of conflict with them. They don't live with conflict. They live a highly satisfied life because their creative instincts gives a lot of satisfaction to them. Young friends, क्रिएटिव लोगों के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो दो चार पॉइंट्स हमने अभी जस्ट देखा, दैट्स वेरी स्मॉल, वेरी मिनिस्क्यूल, फ्रैंकली स्पीकिंग. क्रिएटिविटी के बारे में education psychologists, personality psychologists, they have said, the volumes about creativity. But I feel it is not very advisable, to dwell in that detail. I feel I have given you a glimpse about creativity. My last point and the only point for this video is that creative people, they are not satisfied towing the line of the people. वो follower नहीं होते हैं. They would like to be independent in thinking. They always keep on exploring the new ideas, new ways, and they are very satisfied with themselves internally. They are very happy because if you create something, even in terms of ideas, let me tell you, it gives you immense satisfaction. Now, what is the advantage of being creative? How a creative person can serve the armed forces better? And let me tell you, it may be possible to see some creative people not very successful in the other walks of life. But in the armed forces, friends, there is a lot of scope to apply your creativity, and which way this creativity is helping you in the professional and social life of the armed forces. As an officer, I'm talking about, that we will see in the next video. Young friends, thank you very much for your patience. Thanks for watching. I wish you the best of luck for your preparations in the future. And I request you, please wait for the part 2 of this creativity. Requesting you, please keep visiting my YouTube channel, like, subscribe, press the bell icon, give your comments, spread the words,
And for online instructions, dossier evaluation, and counseling, you may contact me on these numbers. By the way, here I would like to remind you that my next online guidance program is starting on 5th of August, for which the registration is open. You are most welcome to contact me on these numbers. God bless you. Thank you very much once again. Have a nice day.